समझेंगे सूरह अल-बकरा की पहली 30 वर्सेस को। पहले हम लोग समझेंगे हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेफरेंस होगा सही इंटरनेशनल का इंग्लिश पीडीएफ ट्रांसलेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसी का हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. अलिफ लाम मीम, आयत 1 से लेकर 5 तक। कुरान की शुरुआत अल्लाह के उन खास अक्षरों से होती है जिनका गहरा मतलब सिर्फ वही जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यह उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो अल्लाह से डरते हैं। ये वही लोग हैं जो अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर और क़यामत पर यकीन रखते हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही लोग सही रास्ते पर हैं और यही आगे जाकर कामयाब होंगे। इनकार करने वाले लोग, द डिसबिलीवर्स। आयत 6 और 7 में ये समझाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सच को ना मानने की कसम खा रही होती है। आप उन्हें समझाएं या ना समझाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद को और अपने दिल और कानों को बंद करके रखा है और अल्लाह ताला ने उन पर अपनी मोहर लगा दी है। उनके लिए बहुत ही सख्त अज़ाब है। मुनाफिक, द हाइपोक्राइट्स। आयत 8 से लेकर 16 में यह समझाया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को मानते हैं, पर असल में उनके दिल खाली होते हैं। वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, असल में वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो सुधार कर रहे हैं या रिफॉर्म कर रहे हैं। असल में वही सबसे बड़े फसादी होते हैं। ये वही लोग हैं जो ईमान वालों के सामने तो बनते हैं मुस्लिम, पर अपने शैतान और बुरे साथियों के पास जाकर इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने गाइडेंस को बेचकर गुमराही ही खरीद रखी है और यह बहुत ही घाटे का सौदा है। आयत 17 से लेकर 20 में यह समझाया गया है कि उन लोगों की मिसाल उस आदमी जैसी होती है जिसने अंधेरे में आग लगाई, पर जैसे ही रोशनी हुई अल्लाह ने उसका नूर छीन लिया और उन्हें अंधेरे में ही छोड़ दिया। वो सभी अभी सच के लिए बहरे, गूंगे और अंधे हो चुके हैं। वे उस मुसाफिर के तरह हैं जो कड़कती बिजली और तूफान में मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, और अल्लाह ही हर चीज पे ताकत रखता है। आयत 21 से लेकर 22 तक इबादत का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वालों को पैदा किया है। अल्लाह ने जमीन को बिछौना बनाया है, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे लिए फल पैदा किए। जब तुम यह सब जानते हो तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक या पार्टनर मत ठहराओ। आयत 23 से 24 तक अल्लाह ताला उन लोगों को चैलेंज करते हैं जिनको कुरान पर शक है, और वो कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है तो इसके जैसी ही एक ही सूरत बना के दिखाओ। और अल्लाह ताला साथ में कहते हैं कि तुम यह कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और साथ ही नेक लोग के लिए खुशखबरी है, उनके लिए ऐसे ही बाग जो जन्नत में हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वहां पर ऐसे फल मिलेंगे जो दिखने में दुनिया तो जैसे होंगे, पर उनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। वहां उन्हें पाक साफ साथी मिलेंगे और वे हमेशा वहीं रहेंगे। आयत 26 से 29 तक में समझाया गया है कि अल्लाह ताला मिसाल देने में नहीं हिचकिचाते, चाहे वह एक मच्छर की ही क्यों ना हो।
ईमान वाले इससे सबक लेते हैं, पर इनकार करने वाले मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, तुम अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हो? जब तुम बेजान थे, उसी ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। उसी ने जमीन की हर चीज तुम्हारे लिए बनाई है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना एक नायाब सक्सेसर या अथॉरिटी बनाने वाला हूँ, फरिश्तों को लगा कि वह इंसान होगा और वह खून खराबा और फसाद कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा काफी लंबी सूरह है, तो उसको हम लोग कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था पहला पार्ट, और अब हम इसको इंग्लिश में समझेंगे। आगे आने वाले पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। कम से कम इसके 7-8 पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही लंबा है ये सूरा। तो अब समझते हैं सूरह अल-बकरा इन इंग्लिश। वर्स 1, अलिफ लाम मीम। These are special broken letters. Their exact meaning is known only to Allah. This shows that the Quran is a miracle. It uses the same letters people speak with, yet no one can produce a book like this. This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. This Quran is the perfect truth. There is absolutely no doubt in it. It acts as a GPS or a guide for people who are conscious of Allah, who believe in the unseen, establish prayers, and spend out of what we have provided for them. True believers have 3 main habits. They believe in the unseen, like Allah, angels, and the afterlife, even though they cannot see them. They are regular and sincere in their prayers. They are generous, they share and give from the money and blessings Allah has given them. They also believe that the Quran was sent to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and that Allah sent holy books to prophets before him. Most importantly, they are 100% certain that the life after death, the hereafter, is real. People who have these traits are on the right path. They are the ones who will be truly successful in this life and the next. On the other hand, there are people who have made up their mind to reject the truth. For them, it makes no difference if they are warned or not, because they chose to close their minds. Allah has sealed their heart and ears and covered their ears from seeing the truth. Because of their own choices, they will face a heavy punishment. And of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. Some people claim, we believe in Allah and the day of judgment, but in their heart they don't believe at all. They think they are tricking Allah and the believers, but they are only tricking themselves. Allah describes their hearts as having a disease, envy, doubt, and hypocrisy. Because they choose to lie, that disease only grows worse. Verse 11 to 12. The fake reformers. When these people are told, don't spread trouble or corruption, they reply, we are just trying to fix things. We are reformers, but Allah tells us the truth. They are the ones causing the trouble, but they are so lost that they don't even realize it. Arrogance toward faith. When they are told to have faith like the sincere believers, they look down on them and say, should we believe like those foolish people? Allah corrects them. The people who are saying like that, they are the foolish ones, but they lack the knowledge to see it. Verse 14 to 16, playing both sides. When they meet Muslims, they say, we are with you. But when they go back to their evil ones or friends, their leaders, they say, don't worry, we were just joking and mocking them. Allah says, He allows them to stay in their confusion while they wander blindly. They have made a terrible trade. They gave away guidance and bought error. This business deal brings them zero profit.
Verse 17 to 18, the example of the fire. Allah gives a beautiful example. Imagine someone in the dark who lights a fire. Just as it starts to show the way, Allah takes away the light. They are now deaf, dumb, and blind, not physically but spiritually. They can no longer hear the truth, speak the truth, or see the right path. Verse 19, the example of the rainstorm. Another example. Imagine a heavy rainstorm with darkness, thunder, and lightning. These people are terrified that they stick their fingers in their ears to block out the sound of death. They think they can hide, but Allah surrounds them. He knows exactly where they are and what they are doing. Verse 20. The confusion of the hypocrite. Continuing the example of the rainstorm, the lightning is so bright it almost blinds them. When there is a flash of profit or ease, they walk forward. But when things get difficult or darkness, they just stand there stuck. Allah reminds us that He has the power to take away our senses whenever He wills. Verse 21 to 22, the call to humanity. Allah speaks to everyone, all mankind. Worship the one who created you. He lists His favors. Some of the favors of Allah. The earth is like a comfortable bed. The sky is like a protective shielding. Rain brings fruits for us. The lesson. Since you know Allah did all this, do not set a partner or equals to Him. Verse 23 to 24. To those who doubt the Quran, Allah gives a famous challenge. If you think a human wrote this, then produce just one surah like this. He even says they can call all their experts to help. Then comes the truth. You will never be able to, so be mindful of the fire fueled by men and stones. And the rewards for believers, for those who do good. There is beautiful news, gardens with flowing rivers. The fruit there will look familiar, like we have on earth. It will taste heavenly. They will have pure companions and they stay there forever. Verse 26 to 27, the example of the mosquito. Some people questioned why Allah mentioned small things like gnats or mosquitoes in the Quran. Allah says He is not shy to use any example to teach a lesson. Believers see the wisdom in it. Disbelievers mock it. Those who break their promises to Allah and cause trouble on earth are the real losers. The cycle of life. Allah asks a deep question. How can you deny Allah? You were nothing. You were lifeless. He gave you life. He will cause you to die. He will bring you back to life for judgment. He created everything on earth for you and organized the heavens. Verse 30. The creation of man. Allah told the angels, I am going to place a successor authority, human or Adam, on earth. The angels were worried. Will they spread trouble and shed blood? But Allah replied with ultimate wisdom. I know what you do not know. So viewers, this is the English translation and this is not the complete of Surah Al-Baqarah. This is the part 1. We'll cover the next rest of the part in next videos. Till then, stay tuned and please subscribe and share to everyone so that they can also get the knowledge of Quran, the understanding. Not just reciting, but understanding is really important. Thank you all. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.